Hello everyone. Today we will see how to find the area of a triangle using determinants. So let's see what's the formula for it. See, if this is a triangle with vertices A, B, C and coordinates x1, y1, x2, y2, x3, y3. What is the formula? That is the determinant half into coordinates of the first vertex, that is x1 y1 1, then coordinates of the second vertex x2 y2 1 and third vertex x2 y2 1. In this formula of determinants, the last column would always be 1. So using this formula to find the area of a triangle, let's see one question. The question is, show that the points A, B, C are collinear. We have to prove कि A points collinear ने. Collinear means कि ये तीनों points एक straight line ते lie करते ने. अगर आप A prove करना कि A points collinear ने, तो इसलिए अगर आप A prove कर दिए कि ਜਿਹੜਾ area होएगा इन्हां तीन coordinates ਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਏਰੀਆ 0 ਆਏਗਾ ਟਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟਰਾਇੰਗਲ ABC 0 ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆ फाइंड करन दा दिस इज द फार्मूला दैट इज हाफ इनटू coordinates of the first vertex. What are the coordinates? This is x1, this is x2, this is x3. So x1 x2 x3, putting the values over here, that is a1 b1 or simply it's c. Then y1 y2 y3, this is y1, this is y2, the a y3, putting the values b plus c, c plus a and a plus b, and the third column would be 1 1 1. We have to find the determinant. So in order to find the determinant, we can see that how we can make the maximum number of zeros in this determinant. If we minus 1 from 1, it would be 0, and this one from 1, it would also be 0. So आप इन्हां ते operations लगाने हैं. First operation लगाने हैं row 1 ते की operation लगावांगे row 1 minus row 2 in order to make this term 0. ਤੇ row 3 ਤੇ operation लगावांगे row 3 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ row 2 ਦੇ elements ਨੂੰ minus ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਵਾਲਾ element 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ 0 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ column 3 ਦੇ along ਕੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ expand ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ easily ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ determinant ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ. ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, a ਮਾਈਨਸ b, b plus c ਮਾਈਨਸ c ਮਾਈਨਸ a ਤੇ 1 ਮਾਈਨਸ 1 0. ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ b, ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸੌਰੀ a ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗੀ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਆਏਗੀ ਤੇ ਥਰਡ ਕੀ ਆਏਗੀ c ਮਾਈਨਸ b, a plus b ਮਾਈਨਸ c ਮਾਈਨਸ a ਤੇ ਇਹ ਟਰਮ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ 0. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈਂਸਲ. ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ. ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਛ ਰਹਿ ਗਿਆ, a ਮਾਈਨਸ b, b ਮਾਈਨਸ a 0 b, ਸੈਕਿੰਡ रो ਵੀ ਵਿਲ ਰਾਈਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਦੈਟ ਇਜ਼ c ਮਾਈਨਸ b ਤੇ b ਮਾਈਨਸ c 0. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਕਾਲਮ 3, expand along with C3. And you how to expand this determinant? देखो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ थर्ड column ਦੇ along expand ਕਰਾਂਗੇ, first term 0 ਹੈ, ਹੁਣ 0 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਵੀ multiply ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 0 ਹੋਏਗਾ. So we will write directly 0. Now it's term for the second term. एक किहड़ी term है a, second row third column, that is a 2 3 element है, minus 1 raised to the power position of the element, addition of the position of the elements, 2 plus 3 into the number. If we are taking this number, we will leave this row and this column and find and write the other elements. Other elements ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a ਵਾਲੀ row ਤੇ a ਵਾਲਾ column ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ a minus b, b minus a, c minus b, b minus c. ਐਂਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ
2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की होंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस विद द साइन ऑफ नेगेटिव -1 रेज़ टू पावर 5 इज़ -1 राइट। तो आ उस तो बाद नैक्सट टर्म इस टर्म का की होएगा एक्सपैंड करांगे जो किसी भी थर्ड एलीमेंट का थर्ड कॉलम के थर्ड एलीमेंट का तो वह भी 0 होएगा। सो हम आप एक्सपैंड कर लिए की आएंगे वैल्यूज़ a माइनस बी माइनस सी माइनस ऑफ b माइनस ए सी माइनस बी। हम इनू आप ओपन कर लें -1 इंटू फस्ट एलीमेंट नू फस्ट एलीमेंट नाल ए बी हम ए नू माइनस सी नाल ए सी माइनस बी इंटू बी स्केयर माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस बाहर रख लें विच देखते हैं बी इंटू सी बी इंटू माइनस बी स्केयर माइनस ए सी माइनस माइनस प्लस ए बी। हम ये माइनस नूं अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे कि आएगा ए बी माइनस ए सी माइनस बी स्केयर प्लस बी सी माइनस ऑफ बी सी माइनस माइनस प्लस बी स्केयर माइनस माइनस प्लस ए सी प्लस माइनस माइनस ए बी। हम तुसीं देखो ए बी अपने को पॉजिटिव है दिस इज नेगेटिव माइनस ऑफ ए सी पॉजिटिव ऑफ ए सी माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर दिस इज पॉजिटिव ऑफ बी सी दिस इज नेगेटिव। ये सारी टर्म्स की हो जाएगियाँ कैंसल। सो द एरिया ऑफ ट्रायंगल अपने को की आ गया 0। सो अगर ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ गया इट मीनस एक पॉइंट्स की ने कोलिनियर ने लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। वन थिंग मोर जो आप एरिया फाइंड करांगे ट्रायंगल का यूजिंग डिटर्मिनेंट तो यदी वैल्यू हमेशा एब्सलूट वैल्यू आएगी रिजल्ट ये हमेशा एब्सलूट वैल्यू लवांगे आप बिकॉज एरिया कभी भी नैगेटिव नहीं होंगे। वैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नैगेटिव कुछ भी हो सकती है बट इन केस ऑफ वैन वी आर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स तो हमेशा आप उसकी एब्सलूट वैल्यू लेने। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू।